Welcome all stakeholders. From my side, myself Anushka Mondal from Management System Consultancy. Today we will discuss upon the topic of clause by clause document requirements for implementation of basically ISO standards. ISO standard में जो क्लॉजल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिलमेंट करना पड़ता है और क्लॉजल हर क्लॉज में क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, that is the main topic for today's discussion. So let's start the session. हम लोग डायरेक्टली क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आईएसओ स्टैंडर्ड तो आईएसओ क्या है। मेरा और भी वीडियोस है जहां पे ऑलरेडी हम लोग कुछ शेयर किया है, फिर भी इन ए ब्रीफ हम लोग आईएसओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। सो बेसिकली ISO is the acronym of International Organization for Standardization. The organization is based in Geneva, Switzerland. ISO क्या है? It's a worldwide federation of national standard making bodies of different countries, like as ANS USA, BSI UK, FNOR France, और जो एग्जांपल दिया हुआ है ANS मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इस टाइप का जो country wise जो standard making bodies है, like as Bureau of Indian Standard BIS, they are the standard making bodies from India side, so they are also a member of the ISO federation body. The role of ISO is to integrate various standard on products, services, system operating in its member countries and bring out harmonized international standard in these areas which will be acceptable worldwide, basically from the member countries. So ISO का काम क्या है कि they are integrating various from inputs from several countries जो member body है, उसको एक harmonized way में एक standard publish करना जो उसका member country में harmonized way में implement होता है. For your information, there are total 18,500 standards under ISO. उसमें कोई product oriented standard है, कोई service oriented standard है, कोई system oriented standard है. Okay. आज का जो टॉपिक है बेसिकली उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेसिकली सिस्टम ओरिएंटेड स्टैंडर्ड लेके, ओके, लाइक एज ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 और भी जो स्टैंडर्ड है उसका लेके, उसका स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट लेके हम लोग ISO स्टैंडर्ड लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो दिस इज द स्लाइड फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO. It's a worldwide federation, more or less around 200 countries is a federation body. It was established in the year of 1947 in Geneva, Switzerland. So that is the brief about ISO Federation body. Now, management system. Management system क्या है? कुछ सिस्टम को मैनेज करना. In today's market, there are several types of management systems out there. क्या है कुछ एग्जांपल? जैसा ISO 9001 2015 वर्जन, ISO 14001 2015 वर्जन, ISO 45001 2018 वर्जन. ISO 9001 basically quality management system. ISO 14001 environment management system. ISO 45001 occupational health and safety management system. So those are the basically management system standard. So quality, how to improve the quality management system, not quality of the product. Okay, in such way हम लोग को समझना होगा इसको. So system oriented standard one of the thing. Now in short we will discuss about the standard का base क्या है कि PDCA cycle or Deming cycle, as it is invented by Dr. Edward Deming, German based scientist. That's why इसको Deming cycle भी बोला जाता है और PDCA cycle. Plan, do, check and act. Standard में पहले बोल रहे you have to plan for quality management system और जो भी aspect wise you have to plan first. Then जो plan आप लोग किए हैं उसी हिसाब से you comply that it and जो comply कर रहे हो उसको periodically में check करो and if there is any lacuna आप उसका against में act apply करो, action or improvement. So that is the base of every management system of standards. Okay, so that is the base of the standard.
Now we will discuss in a short about the high level structure. High level structure है क्या है? जैसे हम लोग क्या पर बोल रहे थे कि ISO 9001 2015 वर्जन, ISO 14001 2015 वर्जन, ISO 45001 2018 version. Last one is the first one is basically the series of the standard. ISO 9001 series means quality, 14000 series means environment, 45,000 series means occupational health and safety, 27,000 series means data protection, 50,000 series means environment. So this is the series of standard. Last में जो है वो लोग का बाद there is the year of revision. So basically after 2015 का बाद जो भी स्टैंडर्ड रिवीजन लिया है all are follow the high level structure. High level structure क्या है? स्टैंडर्ड का अंडर में जो रिक्वायरमेंट है that is basically called the structure of the clause. जैसे देखें ना clause 1, clause 2, clause 3, clause 4 करके 10 तक दिखाया गया है. That is basically the structure of the clauses standard, and this is called the high level structure. Consists of 10 core clauses. यहाँ पे basically clause number 1 to 3 is basically supporting clause. That is not the auditable or implemented clause. Scope में दिखाया जाता है कहाँ पे implement करना पड़ता है. That is the basically under the scope. Normative reference is there in further reference that is under the normative references. Terms and definition basically standard oriented terms and condition put it over in the clause number 3. Auditable and implemented clause starts from clause number 4 to 10 basically. Okay, that is for your information. Now, moving forward to next slide. This is the structure of the क्या बोल रहे थे कि clause 4 to 10 basically. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो plan do check का हिसाब से plan clause number 4 to 7 total the planning phase, do operation 8 that is the do comply, check 9 performance evaluation that is under the check, act improvement that's the clause number 10. That is basically high level structure का flow है. Mostly कोई भी स्टैंडर्ड क्या बोल रहे थे 2015 का बाद जो भी रिवीजन लिया है ऑल आर फॉलो द सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जो प्लान डू चेक एंड एक्ट. ओके, नाउ हम लोग आज का जो सेशन है मेरा प्रीवियस जो वीडियो है हम लोग वहां पे शेयर किए थे कि क्लॉजल रिक्वायरमेंट. टुडे वी विल फोकस ऑन द पर्टिकुलरली records and documented information requirement under each clause. Okay, so now before starting that every clause by clause हम लोग जान लेते हैं क्लॉज एंड सब क्लॉज का हेडिंग क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है इन शॉर्ट. ओके, क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सब क्लॉज क्या है? हर क्लॉज का हेडिंग उसके बाद सब क्लॉज. क्लॉज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अंडर क्लॉज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 4 सब क्लॉजेस 4.1 4.2 4.3 4.4. 4.1 understanding the organization and its context. 4.2 understanding the needs and expectation of interested parties. 4.3 determining the scope of the यहाँ पे quality management system लिखा हुआ है लेकिन any management system, scope of the management system. 4.4 management system and its processes. Now again the heading clause number 5 leadership and commitment. Clause number 4.1. 5.2 policy. 5.3 organizational roles, responsibilities and authorities. Clause number 6 heading is planning. Okay, now moving to forward. Yes, clause number 6.1 action to address risks and opportunities. 6.2 quality or objectives and planning to achieve them. 6.3 planning of changes. Clause number 7 again heading support. 7.1 सब क्लॉज में resources. 7.2 competence. 7.3 awareness. 7.4 communication. 7.5 documented information. Now again clause number 8 operation doing part. पहले तक plan तक था, doing means operation. Again sub clause 8.1 operational planning and control. Now 8.2 requirements for products and services. 8.3 design and development of products and services. This is under the 8 sub clauses. And furthermore 8.4 control of externally provided process products and services. 8.5 production and service provision. Clause number 8.6 release of products and services. 8.7 control of non-conforming output.
Now again heading performance evaluation, clause number 9.1 monitoring, measurement, analysis and evaluation. Clause number 9.2 internal audit. 9.3 management review. Clause number 10 itself called improvement. That is basically clause and sub clause wise main heading and requirement. यहाँ पे क्या है? For other standards, some subject specific clauses are also applicable. जो हम लोग दिखाए बेसिकली फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट दिखाए, लेकिन एज पर सब्जेक्ट वाइज जैसे एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे क्या है, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट मतलब स्टैंडर्ड का, जैसे एस्पेक्ट इंपैक्ट एनालिसिस, दैट इज एक्स्ट्रा है वहां पे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आईएसओ 45001 में हीरा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस, ईपीआरपी एमआर जैसे पीपीआरनेस रेस्पॉन्स प्लान, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आईएसओ 50001 एनर्जी रिव्यू, एनर्जी बेसलाइन कैलकुलेशन, दोस टाइप ऑफ एक्स्ट्रा है वहां पे, बट फ्लो विल बी द सेम। ओके, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। नाउ जस्ट हम लोग टर्मिनोलॉजी को जानना है कि न्यू वर्जन मतलब 2015 का बाद जो एनएक्सएसएल का हिसाब से जो हाई लेवल स्ट्रक्चर है, आईएसओ स्टैंडर्ड मेंटेन documented information. There are two words basically: maintaining of documented information and retaining of documented information. तो ये दोनों मीनिंग को हम लोग को पहले जानना होगा। मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या है और रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या है। मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मींस ऑल, whether it's record, work instruction, procedure, format जो भी है, all are called in a single word documented information. Now maintain documented information refers to documenting a procedure, form or template that describes how to complete a task, activity or processes. So in form of document, like I say, a quick policy is a document, a procedure is a document. Okay. Written documented information refers to keeping records as evidence that a process or activity has been completed or that requirements have been met. For example, a procedure might include that what evidence to retain. Say procedure का अंदर में लिखा हुआ है reference of the record reference. कौन सा record document करना है होगा. So records is basically retaining of documented information. Maintaining documented information means that the document must be kept and also keep up to date. So in the quality management system, you might maintain your QMS policy, QMS objectives, any procedures you have, and so on by keeping the documents and periodically reviewing and revising them. So that is the meaning of the maintaining of documented information. Retaining a documented information means that document must keep unchanged. रिकॉर्ड एक बार जनरेट होगा चेंज नहीं हो सकता है। काल का मशीनरी का रिकॉर्ड्स वो आप चेंज कर सकते हो, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द थिंग, दैट्स व्हाई दैट इज अनचेंज। सो अगेन इन द कोई मैनेजमेंट सिस्टम एग्जांपल, यू माइट रिटेन टीएमएस मैनेजमेंट रिव्यू रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज, इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन। एन इजी वे टू रिमेंबर इज द रिकॉर्ड मस्ट बी रिटेन्ड, सो दैट इज द रिटेंशन एंड document maintaining of documented information. Now we will discuss on clause by clause क्या requirement है documented information का maintaining and retaining का हिसाब से. Now here's you can see कि clause, topic, type of documented information, requirement क्या है. Directly जो क्लॉज में ही रिक्वायरमेंट है वही हम लोग देखेंगे, कहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करना है. ओके, सो 4.3 से स्टार्ट होता है, बाकी 4. दैट मींस 4.1 4. में एज सच मैंडेटरी कोई डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट्स व्हाई 4.3 से ही स्टार्ट हो रहा है. 4.3 में क्या है, डिटरमिनिंग ऑफ द स्कोप ऑफ द क्यूएमएस और एनी मैनेजमेंट सिस्टम. सेम ही है, जब क्यूएमएस लिखा हुआ है लेकिन कोई मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है. क्या रिक्वायरमेंट है, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्यूएमएस शैल बी अवेलेबल एंड मेंटेन एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. आपको स्कोप सेट करना होगा, कहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और एनी मैनेजमेंट सिस्टम विल बी एप्लीकेबल और इंप्लीमेंट करो और सर्टिफिकेशन कवरेज. दैट इज बेसिकली स्कोप ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट इज एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको एप्लीकेबिलिटी और अवेलेबल
एस्टेब्लिश करना होगा। 4.3 4.4.2 QMS and processes, again document requirement. The extent necessary, the organization shall maintain documented information to support the operation and its processes. That means a process flow diagram, any operational methodology, that is the basically requirement under this document. एक process flow diagram, एक document आपको रखना होगा, ठीक है, under the clause. Now QMS 4.4.2B में क्या है? QMS and its process है record. यहाँ पे रिकॉर्ड का क्या मतलब है? ऊपर में जो प्रोसेस फ्लो डायग्राम और एनी प्रोसीजरल एस्टेब्लिश जो किए हो आपने, उसको प्रूव करने के लिए, मतलब से इसे पैकिंग इंडस्ट्री, तो पैकिंग मटेरियल आप ले रहे हो, ओके, तो पैकिंग मटेरियल का से आप प्रोसेस फ्लो डायग्राम में लिखा हुआ है इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन. तो इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन इज एज ए टैग पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट. अभी इनकमिंग इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड्स कहाँ पे होगा कि अगर कोई पूछेंगे कि भाई हमको 6 तारीख का कोई लास्ट डे का कोई टेस्ट रिपोर्ट देखा, दैट इज द रिटन ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब वही टेस्ट रिपोर्ट क्या होगा एज ए रिकॉर्ड टू प्रूव द प्रोसेस. दैट इज बेसिकली रिक्वायरमेंट अंडर द 4.4.2B. नाउ 5.2 ए में क्या है? कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी और एनी पॉलिसी. Quality policy shall be available and maintained as documented information. ये भी documented information का requirement है. Okay. Now, just example for your information. Quality policy कैसे लिखा जाता है और कैसे होता है? Just example हम लोग दिखाना चाहेंगे. से कोई एक example लेते हैं. Quality policy. We at company name are committed to say manufacturing and supply of fabricated metal और कोई भी जो उसका production है, products as per customer specification and drawing to meet the customer's requirement and enhance customer satisfaction level by continuing improving through quality management system, provide products and services that delight customers through achieve excellent. Quality policy means some commitment on the quality side, management system side. Achieve excellent quality and service standard first time and every time. Continually improve employee skill and knowledge through training and participation, continuous improvement of products and process performances, comply the legal and other statutory requirements, and continually improve, provide safe working environment to all stakeholders by complying zero discharge, zero accident at workspace. This is the quality policy statement. नीचे क्या होगा? डेट में जो established हुआ है और टॉप मैनेजमेंट का सिग्नेचर. That is the एक फॉर्म ऑफ द quality policy. आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो. नाउ और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी. अगेन सेम we company name are committed to environment health and safety for all our employees, contractors, visitors and those affected by our activities by continually improving the processes through effective application and review of the EHS environmental health and safety management system by again commitment क्या? Providing pollution free, safe and healthy working environment which prevent injury and ill health and also protect the environment. Complying all applicable legal, statutory and other requirements. Conserving natural resources and energy by their responsible and efficient use and protect biodiversity and ecosystem. Providing appropriate training to employees and contractors for enhancing awareness on significant environmental aspects and hazards by reducing EHS risks, ensuring all employees play an active role through consultation and participation in the effective implementation and maintenance of EHS management system. So this is the environmental health and safety side से commitment. Now it's a sample copy of one risk assessment register जहाँ पे ये बेसिकली 6 प्लानिंग जो हम लोग लिखे थे 6 प्लानिंग का ही रिक्वायरमेंट है असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रजिस्टर. तो एक जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए एक एग्जांपल दिया है. क्या हो सकता है एक रिस्क रजिस्टर कैसे बना सकते हैं हम लोग? नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे इशू नंबर, डेट जब हम इशू करोगे, रिविजन नंबर फ्यूचर में होता है तो उसका रेफरेंस नंबर, रिस्क असेसमेंट रजिस्टर, रजिस्टर का नंबर कोई आप दे सकते हो, डेट ऑफ
प्रिपरेशन, जिस डेट में आप ये प्रिपरेशन ले रहे हो। नेक्स्ट में क्या है, डेट ऑफ नेक्स्ट इवोल्यूशन, इसको तो पीरियडिकल में कब इवोल्यूट करना होगा, तो अभी पहले प्लानिंग में आप रिस्क असेसमेंट करो, उसके बाद पीरियडिकल में इसको इवोल्यूट करते रहना। क्या है, सीरियल नंबर, कौन सा प्रोसेस में आप कर रहे हो, प्रोसेस का नाम, देन एक्टिविटीज, रिस्क डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड क्या रिस्क डिस्क्रिप्शन है, दैट टू पुट इट ओवर देयर। नाउ उसी रिस्क का ओरिएंटेड रिस्क क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक और प्रोसेस, किस टाइप का रिस्क है, स्ट्रेटेजिकल रिस्क है ना प्रोसेस ओरिएंटेड रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क इज बेसिकली एक्सटर्नल ओरिएंटेड रिस्क, प्रोसेस रिस्क बेसिकली इंटरनल रिस्क होता है, प्रोसेस में जो एक्टिविटी वाइज रिस्क किया है। रिस्क आइडेंटिफाइड एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल, एग्जिस्टिंग रिस्क है ना पोटेंशियल रिस्क, वो आप आइडेंटिफाई करो। देन सिवियरिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क, ऑलरेडी एक आप 5x5 मैट्रिक्स कर सकते हो, 10x10 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स कर सकते हो विथ एक्सप्लेनेशन एंड टिक टिक, सिवियरिटी लेवल क्या है, प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है इसका, देन मल्टीप्लिकेशन ए बाई बी एंड आरपीएन नंबर, जिस लेवल में वो हिट कर रहा है, हाई लेवल और लो, दैट टू बी आइडेंटिफाइड एंड यू हैव टू सेट द किस लेवल के बाद आप एक्शन लोगे, तो उसी हिसाब से एक्शन प्लान और अपॉर्चुनिटी कौन रेस्पॉन्सिबल होगा एंड पीरियड इकोनॉमी में उसका इफेक्टिवनेस आप जज करते रहोगे। ओके, so this is the one of the example of the risk assessment register. Okay, now yes, 6.2.1 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव प्लानिंग टू अचीव द, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, एक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव शीट जहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, दैट इज द 6.2.1 का रिक्वायरमेंट। नाउ 7.1.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस, इसमें रिकॉर्ड का रिक्वायरमेंट है बेसिकली, लाइक आपका रिसोर्स मॉनिटरिंग कैसे करोगे, तो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट कुछ हो सकता है, दैट इज द रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल योर इक्विपमेंट्स, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेस। मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी, यहाँ पे रिकॉर्ड का जरूरत है, क्या है, दैट इज बेसिकली द कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं आपका इंस्ट्रूमेंट का, दैट इज कैलिब्रेशन रिकॉर्ड अंडर द 7.1.5.2.a, that is a requirement. Now 7.2b competence, वहां पे भी रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट है, लाइक एज कॉम्पिटेंसी रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, फिर ट्रेनिंग एवोल्यूशन रिकॉर्ड्स, दोस आर द अंडर 7.2। 7.5.1 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, कोई टेम्पलेट हो सकता है, कैसे आप डॉक्यूमेंट कंप्यूट कर रहे हो, दैट इज द लोग सैंपल दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, वो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। नाउ 8.2.3.2 रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड का जरूरत है कि आप कोई कस्टमर आपको मटेरियल मांग रहा है आपसे, आप रिव्यू करके देखो कि आप उसके दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे, सही टाइप का स्पेसिफिकेशन, सही प्राइस में, सही स्पेसिफिकेशन, सही पीरियड में, दैट इज द रिव्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लॉजल रिक्वायरमेंट। If design development is applicable, then 8.3 applicable होता है डिजाइन डेवलपमेंट, यहाँ पे भी रिकॉर्ड, डिजाइन इनपुट, डिजाइन फिजिबिलिटी चार्ट स्टडी, डिजाइन प्लानिंग, डिजाइन आउटपुट, डिजाइन वैलिडेशन, दोस आर द रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग का। नाउ हम लोग जो बोल रहे थे कि एग्जांपल लेते हैं कि एक से इट्स अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल रिक्वायरमेंट ऑफ 7.5, जो डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे होता है, एक टेम्पलेट हम लोग दिखाया है, से एक स्टैंडर्ड, कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, वर्किंग इंस्ट्रक्शन, कोई डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे, किस वे में, किस स्ट्रक्चर में बना सकते हैं हम लोग, दैट इज द टेम्पलेट ओवर हियर। किस टाइप का टेम्पलेट है, प्रोसीड्यूर, वर्किंग इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट, उसका नंबर दीजिए आप लोग, डॉक्यूमेंट से कंपनी नाम एंड उसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट ये कर सकते हो। इसका पेज नंबर, पेज नंबर क्या है, इशू नंबर जो इनिशियली इशू कर रहे हो, रिवीजन नंबर फ्यूचर में होगा, डेट, उसका टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, वो प्रोसीड्योर किस टाइप का है, क्या वर्क सिचुएशन है, क्या डॉक्यूमेंट है, रेफरेंस यहाँ पे क्या है, से इसका रेफरेंस का दूसरे कहीं पे दिया हुआ है मैनुअल में, उसका रेफरेंस यहाँ पे दीजिए। ओके, इस प्रोसीड्योर का और वर्क इंस्ट्रक्शन जहाँ पे रेफर किया है उसका रेफरेंस यहाँ पे दो, इंटरलिंक के लिए, ट्रेसेबिलिटी के लिए, पर्पस ऑफ द प्रोसीड्योर, वर्क इंस्ट्रक्शन, स्कोप,
उसमें स्कोप क्या है, कि आप कहाँ पे वो लिमिटेड है, वर्क इंस्ट्रक्शन प्रोसीड्योर डॉक्यूमेंट, उसका किस नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट वो आप आइडेंटिफाई करो। देन सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा करके एक्टिविटीज, आप एक्टिविटीज को लिखो, उसका रेफरेंस नंबर मीन्स रिकॉर्ड रेफरेंस आप लिखो, वहां पे कौन सा कहाँ पे आप रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ कैप्चर करें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ऐसा करके आप डिफाइन करते जाओ। नीचे में क्या है, प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय एंड इशूड बाय, कौन इसको अप्रूव कर प्रिपेयर कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, इशू कर रहा है इसका, दिस स्टैंडर्ड फ्लो ऑफ एनी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ डिजाइन डेवलपमेंट इनपुट्स जो हम लोग चर्चा करते हैं, दोस आर द बेसिकली द ऑल रिकॉर्ड रेफरेंस डिजाइन डेवलपमेंट एप्लीकेबल इनपुट्स, डिजाइन डेवलपमेंट कंट्रोल, आउटपुट एंड चेंजेस under the 8.3 clauses. All record references required. जो हम लोग if design development is applicable, it is the requirement under 8.3 clauses. Yes. Now 8.4.1 control of externally provided process products and services. ये बेसिकली परचेजिंग का रिक्वायरमेंट है, आप कैसे वेंडर एनरोलमेंट करते हो उसका रिकॉर्ड, वेंडर एवल्यूट करते हैं उसका रिकॉर्ड, इफ एनी एक्शन प्लान इज देयर अगेंस्ट द नॉन कन्फर्मिटी वो आप वहां पे रिकॉर्ड कर रहे हो, दोस आर द रिकॉर्ड रेफरेंसेस। 8.5.2 आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी, ये भी रिकॉर्ड रेफरेंस, आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी, कोई बैच नंबर, कोई टैग नंबर, आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी के लिए, दिस इज द रिकॉर्ड रेफरेंसेस। 8.5.3 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कस्टमर्स एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, अगर कोई आपका वर्क प्लेस में किसी कस्टमर्स प्रॉपर्टी है, देन यू हैव टू keep the record as a record references, like as say customer sample, आपको इस customer sample दे रहा है, that is also one kind of customer property for your information. Okay, 8.5.6 control of changes, यहाँ पे भी रिकॉर्ड, कोई चेंजेस कर रहे हो उसका रिकॉर्ड, उसका हिस्ट्री आप मेंटेन करो 8.5.6 में। देन 8.6 रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे भी रिकॉर्ड, कौन कौन पर्सन अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट के लिए एलिजिबल है और ऑथोराइज्ड है, वही पर्सन का ट्रेसेबिलिटी टू बी मेंटेन एज ए रिकॉर्ड अंडर दिस क्लॉज। 8.7.2 कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट, यहाँ पे भी रिकॉर्ड का जरूरत है, किस टाइप का नेचर ऑफ नॉन कन्फर्मिंग जनरेट हुआ है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज द रिकॉर्ड रेफरेंसेस का जरूरत है। इसका साथ साथ आपका डूइंग पार्ट खत्म हुआ, प्लान 2, प्लान कहां तक था 7 तक, 8 में पूरा डूइंग पार्ट, नाउ 9 इज चेकिंग, मींस मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस, एवल्यूशन, यहाँ पे भी रिकॉर्ड रेफरेंस का जरूरत है। आपका खुद का ट्रेंड एनालिसिस, आपका खुद का डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस एनालिसिस, दोस आर द अंडर दिस क्लॉज आर रिक्वायरमेंट। कस्टमर फीडबैक भी हो सकता है, स्टेक होल्डर फीडबैक भी हो सकता है, दोस आर द रिकॉर्ड्स अंडर दिस 9.1.1. Okay, now 9.2.2 इंटरनल ऑडिट, यहाँ पे भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। इंटरनल ऑडिट का प्रोसीड्यूर हो सकता है, इंटरनल ऑडिट का आपका प्लान, इंटरनल ऑडिट शेड्यूल, इंटरनल ऑडिट रिकॉर्ड्स, एनी नॉन कन्फर्मिटी रिकॉर्ड्स, उसका रिकॉर्ड्स, उसका क्लोजिंग स्टेटस, ऑल आर द रिकॉर्ड्स अंडर इंटरनल ऑडिट। 9.3.3 management review output, it's also record, like as management review agenda wise point discussion, uska minutes, that is the requirement under this clause. improvement में क्या है, non conformity and corrective action में बेसिकली रिकॉर्ड रेफरेंस का जरूरत है, से एक कोई नॉन कन्फर्मिटी रेज हुआ है 8.7 में, ओके, उस रिकॉर्ड से कैसे हम लोग उसका अगेंस्ट में रिएक्ट कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं, फिर हम लोग करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, दोस आर द रिक्वायरमेंट्स दैट टू बी मेंटेन एज ए डॉक्यूमेंट, रिटेन करना होगा, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। बेसिकली फॉर योर नॉलेज पर्पस, दैट्स ऑल फॉर 4 to 10 नंबर क्लॉजल रिक्वायरमेंट्स। फर्दर हम लोग और भी जो वीडियोस हैं वहाँ पे हम लोग और भी चर्चा किया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन लेकर चर्चा करेंगे। वीडियोस अच्छे लगते हैं काइंडली इसको मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेटा इसको लाइक कीजिए फॉर प्रमोशनल पर्पस, और contact numbers also been over there, you can directly contact us for all consultation purpose and further improvement purpose. So that's all friends,
Thank you for sharing your time. Bye.